लास्ट सेशन में हमने कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स का बेसिक समझा था। अब हम थोड़ा और डिटेल में इन टॉपिक्स को देखते हैं। अब लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जहाँ पे कंपनी का कॉस्ट इनकर होता है लेकिन उससे डायरेक्टली कोई प्रॉफिट्स जनरेट नहीं होता। वेराज प्रॉफिट सेंटर्स आर द यूनिट्स जहाँ से कंपनी को डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट होता है, जहाँ से कंपनी को डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होता है। अब कल हमने देखा था कि दिस कॉस्ट सेंटर कैन बी डिपार्टमेंट्स, इट कैन बी रीजन्स एंड आज हम इसमें और एक वर्ड ऐड करेंगे और एक टर्म ऐड करेंगे विच इज functions. A cost center can be department, region or functions. अब let's say this is department. In department they have HR, finance, marketing, sales, manufacturing and so on. Region में this is geographical region. Functions में now अब let's say HR डिपार्टमेंट है। अब HR डिपार्टमेंट में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। Let's say one function is recruitment, another function is counseling. Similarly, finance में they can have, let's say, collections, they can have billings, then marketing में they can have advertisements, they can have campings, right? ऐसे ही for different departments, different functions can be performed. अब कल जब हमने कॉस्ट सेंटर देखा था, तो हमने क्या किया था? हमने डिपार्टमेंट्स को एज अ कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। अब आज हम सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट्स व्हाट वी विल डू इज हम इन फंक्शंस को एज अ कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे एंड देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स आर, let's see, it is group of cost centers which belongs to the similar category. Okay, let's say cost center category में we can have production cost center, we can have admin cost center, we can have finance cost center, we can have sales cost center. अब ऐसे कॉस्ट सेंटर्स जो प्रोडक्शन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन कॉस्ट सेंटर्स को हम प्रोडक्शन ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। जो एडमिन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, जो एडमिन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन कॉस्ट सेंटर्स को हम एडमिन ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। नाउ पहली चीज जो हमें कंट्रोलिंग में डिफाइन करनी होती है, दैट इज कंट्रोलिंग एरिया। अगर कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन नहीं है तो आप कंट्रोलिंग में कुछ नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट सेंटर भी नहीं बना सकते, आप कॉस्ट सेंटर भी नहीं बना सकते, या आप कोई और सब मॉड्यूल्स भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। नाउ दिस कंट्रोलिंग एरिया, it defines the structure for the creation of
cost center, profit center, and internal orders. जब आप कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करोगे तो इसमें आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे विच इज कॉस्ट सेंटर हायरार्की. नाउ cost center hierarchy, what is this? It is a highest node to which cost center groups or cost centers can be assigned. Now let us take one more example जहां पे हम कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज भी रख रहे हैं एंड कॉस्ट सेंटर्स भी रख रहे हैं एंड इन दोनों को हम कॉस्ट सेंटर हायरार्की से असाइन कर रहे हैं. ड्यूरिंग आवर पैरेलल लेजर अकाउंटिंग हमने कंट्रोलिंग एरिया ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. SPRO, SAP रेफरेंस IMG. अब तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहे थे. अब हमने कंट्रोलिंग स्टार्ट किया है तो वी विल गो इन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया. गो टू मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया. अब हमने कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन किया था HNMO. ओके, जो लास्ट कंपनी कोड हम यूज कर रहे थे इन द रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, वहां पे हमने HNMT डिफाइन किया था. बट जब मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया, वी हैव डिफाइंड इट एज HNMO. एंटर. Select this controlling area और डबल क्लिक ऑन दिस कंट्रोलिंग एरिया. अब मैंने आपको बोला था कि जो ग्रुप करेंसी आती है इन द लेजर्स वो कंट्रोलिंग एरिया से आती है, करेक्ट? अब जब हम ये कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की. हमने यहाँ पे कोड दिया था CCH_HNMO. अब यहाँ पे सिर्फ हमने कॉस्ट सेंटर हायरार्की का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. ओके, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोलिंग में अब तक कुछ भी चीजें असाइन नहीं है. ना इसको कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स असाइंड है, ना इसे कॉस्ट सेंटर्स असाइंड है. अब हम इस कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की को ऑब्जेक्ट्स असाइन करेंगे इन कंट्रोलिंग. बिफोर दैट हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. नाउ द कोड फॉर दिस स्टैंडर्ड हायरार्की इज CCH_HNMO. CCH_HNMO. This is सर ये अपने जो नए वाले सर्वर पे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, मतलब कंपनी क्रिएशन से लेके अभी तक. yes, मतलब जैसे कि अपना पूरा फिजिकल ईयर वगैरह सब कुछ. करेक्ट, सब कुछ. आप अगर चाहो तो
आप स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर्स यूज कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप खुद से फिस्कल ईयर्स क्रिएट करो, बिकॉज ये सर आपको वो समझ आएगा। बेटर रहेगा, यस। प्रैक्टिस में रहेगा। नाउ दिस इज योर कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की। अब इसके अंडर हम कुछ कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। लेट्स से प्रोडक्शन, देन लॉजिस्टिक्स, then recruitment. Okay, now what are these? These are cost center groups. अब इन कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स के अंडर हम कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करेंगे। अब लेट्स से होंडा मोटर्स में इन प्रोडक्शन देर आर three functions which are performed, and वो तीनों functions और now in this production department तीन functions perform होते हैं। First function is cutting of metal pieces. Let's say this is production and cutting. This is production, painting, and next is production, let's say assembly. ओके, अब तीन फंक्शंस हैं एंड ये तीनों फंक्शंस प्रोडक्शन में ही आ रहे हैं, राइट? ये प्रोडक्शन की ही पार्ट है। So these three functions are created as cost center, and this departments या this groups प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, रिक्रूटमेंट, ये हमने एज अ कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट किया। ये समझ आ गया या कोई डाउट्स है इसमें? नो सर। ओके, अब सिमिलरली लेट्स सी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में वी कैन हैव वेयर हाउस जहाँ पे कंपनी उसका सामान रखती है। वी कैन हैव लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी का कॉस्ट इनकर होता है। देन वी कैन ऑल्सो हैव सम व्हीकल्स, या लेट्स से वी कैन हैव other buildings again for this logistics purpose. Again, this will be cost center. Similarly, recruitment में there can be what we took. There can be एम्प्लॉय हैरिंग। correct employee
हायरिंग और रिक्रूटमेंट, काउंसलिंग, recruitment is nothing but employee hiring. Then counseling, ट्रेनिंग sorry, ट्रेनिंग okay, training, fine. अब रिक्रूटमेंट में ये सारे कॉस्ट सेंटर्स बन सकते हैं. Now this is what a cost center hierarchy, cost center group, cost center looks like. अब similarly we have profit centers. कॉस्ट सेंटर्स में कॉस्ट इंकर होता है, प्रॉफिट सेंटर्स में प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है.